इनकम डिस्पैरिटी इज राइजिंग एंड द रेट इज ओनली गोइंग टू इंक्रीज। तो इनकम डिस्पैरिटी का मतलब यही है, अमीर और अमीर होते जाते हैं और गरीब और गरीब होते जाते हैं। एंड द कैटलिस्ट in this, the next thing is that the introduction of AI, chat GPT tools like this. And how is it a catalyst? तो आप अगर देखोगे तो चाइना में एक ऐसी कंपनी है Xiaomi, उसने एक ऐसा प्लांट बनाया है जो कि फुली ऑटोमेटेड है by using AI. There is no human interference at all. तो आप सोच सकते हो कि अगर हर वेल्दी इंसान के पास इसका फुल एक्सेस आ जाता है तो उनको कभी भी मैनुअल लेबर्स को जॉब देने का या फिर रिपीटेटिव टास्क के लिए जहां पर ह्यूमंस का जरूरत होता था वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। एंड द वेल्दी पीपल विल कॉन्सेंट्रेट मोर एंड मोर वेल्थ एंड दैट्स हाउ द इनकम डिस्पैरिटी इज ओनली गोइंग टू गो अप। तो अगर आप फ्यूचर की सोचोगे तो यहाँ पर सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो गिग वर्क करना है या तो एंटरप्रेन्योर या फिर एक बिजनेसमैन बनना। यही दो ऑप्शन आई थिंक आर रियली गोइंग टू एग्जिस्ट। अभी वो चीज यहाँ पर एविडेंट नहीं दिखाई देगी, पर आप जब 5 years 10 years डाउन द लाइन सोचोगे तो ये चीज बहुत ज्यादा एविडेंट हो जाएगी। आप कोई भी टेक्नोलॉजी देख लो, अभी तक जो इवॉल्व हुई है वो सिर्फ बेटर और बेटर होती गई है। तो अगर आप आज देखोगे तो AI ऑलरेडी इतना बेटर है कि वो आधी चीजें बहुत ज्यादा रिफाइनमेंट के साथ और फिनिशिंग के साथ कर रहा है। तो आप खुद सोचो कि वो और बेटर ही होना है। तो उस हिसाब से 5 साल या 10 साल बाद आप खुद सोचो कि वो उसमें कितना ज्यादा एवोल्यूशन होने वाला है और वो टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा बेटर होने वाली है। एंड जब वो टेक्नोलॉजी बेटर होगी इसका मतलब एफिशिएंसी बढ़ेगी, और एफिशिएंसी जब बढ़ेगी तब लोगों को या फिर जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं या बड़ी कंपनियां होती है उनको लोगों की जरूरत नहीं होती है और वो जॉब कट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको एक तो एफिशिएंसी मिल रही है और दूसरा चीज देयर इज नो शिफ्ट्स। पीपल वर्क इन शिफ्ट, मशीन्स डोंट वर्क इन शिफ्ट, मशीन्स वर्क 24/7 विदाउट फेल। तो वहां पर हम एज ह्यूमंस भी कंप्लेन नहीं कर सकते। सो ऑल इन ऑल आई एम ट्राइंग टू से ओनली वन थिंग, दैट वी नीड टू चेंज अप्रोच फ्रॉम हियर ऑन। आई एम नॉट सेइंग इट इज वेरी much instantly or evidently, but we have to nudge ourselves in that direction so we can figure out other options in the meantime, and when time comes we don't have to panic about the situation. So the thing is that I take life as just experience, and the experience should be good. The thing is that we don't have to really worry about the introduction of new things और न्यू टेक्नोलॉजी। सो आप अगर देखोगे कोई भी नई चीज को एक्सेप्ट करने के दो अप्रोचेस हो सकते हैं। वो ये कि एक तो उससे डरना और जो हम कर रहे हैं उसी के ऊपर बहुत ज्यादा रिलायबल रहना और इनसिक्योर फील करना, या फिर सेकंड अप्रोच वो ये कि उस टेक्नोलॉजी को सीखना या फिर उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज करना और उसमें बेटर होके अपना फ्यूचर और ज्यादा सिक्योर करना। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि इन दोनों में से कौन सा अप्रोच ज्यादा बेटर है। सो एज आई वाज सेइंग, आई टेक लाइफ एज जस्ट एन एक्सपीरियंस। सो अगर आप मुझसे पूछोगे तो हम अगर गरीब या मिडिल क्लास में पैदा भी हुए तो हमारा एक एम्बिशन फिक्स होना चाहिए, वो ये कि एक बार जिंदगी में सिर्फ एटलीस्ट एक बार रिच लाइफ देखना ही है। ये अगर आप इतना भी एम्बिशन रखते हो तो आप बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। हमारा लाइफ भी एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए हमारे। अगर हम पुअर या मिडिल क्लास में भी है तो हमारा एम्बिशन यही होना चाहिए कि हम कैसे रिच और अल्ट्रा रिच का जो एक एम्बिशन है उसको पूरा कर सकते हैं। और आप एक बात तो समझ ही सकते हैं कि आप हमेशा नीचे वाला जो लेवल है वो फिर से एक्सपीरियंस कर सकते हो, पर ऊपर वाला एक्सपीरियंस बाय चॉइस एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। एंड बाय दैट आई मीन इफ यू आर रिच you can always experience the poor life, but if you are poor you don't have the choice to experience the rich life. You have to reach there in order to experience. So being rich is all inclusive experience. So the thing is, recently we all saw the Ambani's wedding. What an extravagant, dream like, fit for a king event it was. It was really the event for a decade. So I say, can we not even expect or envision 10% of that for ourselves? I know you will say you must be kidding, but the thing is that how small our mindset or vision will be if we don't even consider ourselves deserving for 10% of that. And I'm saying not just go for it, but at least have an ambition for that, so we can take steps in that direction, and one day we might reach. Who knows if we try? But if we don't even put that thought in our minds, how will we ever be able to approach in that direction? Are we here just to
celebrate others enjoying their life to the fullest, and while we dodging bullets every day in our lives. People's lives are miserable, they are really living hell, and they get happiness by seeing others win. Where is our own ambition? How are we going to make it our dream, our life? We see cricketers, politicians, actors wearing expensive outfits, watches, and whatnot, and taking expensive vacations. I truly admire that, and it inspires me in a way. But the thing is that they have worked very hard for that. They have chosen a hard path. Every one person who has risen from rags to riches, I truly admire them. They really deserve every inch of their success and all the happiness coming their way, because they really made a different choice when nobody was looking at it. You can see or take an example of Rohit Sharma, Virat Kohli, Hardik Pandya, the Zerodha brothers, even Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan. They are all from different walks of life, and still they are very successful. The only thing common in all of them is that they made those choices. They were nobody, and they are really the icons today. They really deserve the only best, because they had the courage to visualize their life that way. So the primary difference comes in the choices we make, the paths we take, the time we take to figure out life and what's best for us. Most of us just skip this part and start their lives before even realize they have really started their lives. So we all have that opportunity where we get to decide whether to go to a traditional path like all of us around, or to listen to that small voice which tells us to go crazy, dream big, have that goal, go crazy and chase the unthinkable, unimaginable, and be only the best and enjoy only the best for ourselves. The thing is, to make the second choice, it is really hard, but it really pays off. All the great people you see around, they did not hop onto that first job, and even if they did, later in life, whenever they got chance, they broke free and took the courageous decision. They did not let their dream or their ambition for greatness die along the way, and that's why they are where they are today. It's really about the choices we make. It's really about the ambition we have. So if I take an example which is a very close one, so my brother works in an IT company, and it's been 6 years him working there. But the thing is that 4 years ago he tried to do or explore other things as well, and he started investing and exploring the investment world, and it took him 4 years to develop a system which is now working very well for him. So the only thing that I derive from that example is that it is the never-ending quest to figure out. So I'm saying that rich people invest their time to figure out the best way they can do things or the best opportunities around, and not take the first job or first thing that comes in their way. And what do? The next step is to build systems. Once you build a system, you can really hire any person to do the repetitive job, and you can start working on something else. So the aim of this channel is to figure out opportunities around us, and I alone can't do all of it, because that's where our limitation is. We don't have enough time. All of us or who carry the same vision are welcome on this channel. So the thing is that we are only going to discuss opportunities and work on them, not just discuss. I already have few opportunities which I am going to reveal in the next upcoming videos, and I really hope that people who carry the same vision and hunger in their mind will really enjoy this, and they will join.